for operating system, and the topic that we are going to discuss is process concepts. So already in last lecture we have seen some uh, we have taken some ideas of process, what is actually process and what is the importance of process over the operating system as well. So let us move further for detailed study of process in operating system. So operating system has a different number of varieties as well. Okay, like we have a batch system. Okay, then we have a sharing system. Okay, and we have a multi operating system also. Okay, so it works with respect to the given number of the jobs as well. Okay, as number of users are there, as we have many different numbers of operating system as well. In multiple users, it can manage multiple number of programs, can also be there. Okay, so here is what first. Let us go with the batch system. So here we have an operating system a which has a batch system in which we take number of batches. Okay, number of batches in the sense of number of process. Okay, for example, if we program our operating system or the process or into a batch process, we take or we program to have five processes at a single moment of time. So what happens? It takes five jobs every time. Okay, for first second it takes five jobs. Again, after the next batch, when it comes, the next batch also takes five jobs. So for each and every job, okay, for each and every batch, it takes five jobs collectively and gives output in similar way. So if it takes five jobs for input to a process, okay, to make a process into a processor, the processor gives output in collectively, that is five jobs, okay, after the completion. So that means five jobs lets into a processor, and processor will lets out for five jobs. So the intake and outtake will be output will be the similar five jobs to five jobs. So accordingly, the processor is configured to have a batch process every number of time. Okay, so દરેક સેકન્ડમાં શું થશે, number of students જેમ કે 50 જેમ કે તમારે યુનિવર્સિટી એક્ઝામ્સ હોય તો 500 સ્ટુડન્ટ્સ હોય કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના, તો કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના 500 સ્ટુડન્ટ્સ એક સાથે એક્ઝામ આપે અને રિઝલ્ટ પણ એક સાથે આપે. Okay, so here also makes a batch system as well. That is why તમારી જે laboratory session જે છે, okay, એમાં બેચ સિસ્ટમ હોય કે આખી બેચ B1 છે, B2 છે, B3 છે. So it is a batch processing system. Okay, the next is time sharing system. Okay, time sharing means it takes a time, the user programs or a task. So each and every it measures, okay, it measures time that process one, okay, process 2 and process 3 and process 4 and process 5 will collectively will have this number of time to be taken over the process for the processing. So it shares the time, so the processor time will be shared amongst number of processes. So it means જેટલી બી નંબર ઓફ પ્રોસેસીસ છે બધાના ટાઈમ શેર્ડ થઈ જશે. That means આપણે કાં તો પ્રોસેસ નો ટાઈમ ફિક્સ કરી નાખીએ, ઇધર પ્રોસેસિંગ નો ટાઈમ ફિક્સ કરી નાખીએ. સો either we fix time for each and every process, or we fix
time for each and every the batch of a processor. Okay, the execution time will have to fix, so it will share the time. Okay, so 5 minutes it has to finish 10 processes. It will process, it will, the collectively it goes with the execution, but execution will manage in such a manner the time will be shared, and the shared time will be given to each and every process. Okay, so this is how the execution occurs for in time sharing system. So the process, a program in execution, process execution must progress in sequential fashion. Okay, આમાં batch process is, so the process જે છે, the processor, what the processor will do, processor will process each and every process execution in sequential way. So each and every process will have similar number of time for execution, similar number of time for the exiting from a processor. એટલે number of processes जितनी भी अंदर आएगी उतनी ही number of processes will be output में जाएगी. So that means input and output दोनों similar way में execution में जाएंगे. So the process code will start execute. Program code is what it takes a process and execution happens over the processor. Okay, so the current activity including the program counter and process register. Okay, so this will be adjoined for the execution, like a program counter che, processor che, and processor register. So what will happen, let us will see into the next slide as well, that how the execution occurs over the प्रोसेसर के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, ये भी हम देखेंगे इन टू कमिंग स्लाइड्स. So and there is a big contribution of program counter. Program counter means it is kind of a roll call. It is kind of roll call. Okay, okay, similar like a 0 to max. Okay, so when a processor starts execution, so it starts counting for each and every process up to it reaches to the maximum number of process. Okay, so number of process which are available, जितनी भी process available है मेमोरी के अंदर, process की मेमोरी के अंदर, so वो कहाँ जाएगी, वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होगी. सो 1 by 1 एग्जीक्यूशन के लिए हमें चाहिए एक प्रोग्राम काउंटर, जो हर एक प्रोग्राम मीन्स हर एक प्रोसेस को पॉइंट करता रहेगा और काउंट करता रहेगा कि भाई रोल नंबर 1 को एग्जीक्यूशन में डालो, रोल नंबर 2 को एग्जीक्यूशन में डालो, रोल नंबर 3 को एग्जीक्यूशन में डालो, रोल नंबर 4 5 6 7 10 15 20 100 नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में डालो. ओके, और जैसे जैसे ही वो एग्जीक्यूशन में जाएगा, प्रोसेसर will make a number of register. It will make an entry over the register. Register means कौन सी नंबर की प्रोसेस एग्जीक्यूशन में गई. ओके, उसका एग्जीक्यूशन हो गया, दैट मीन्स इट इज फिनिश. मतलब इनपुट जितना आया उतना ही आउटपुट में जाना चाहिए. इन सम ऑफ द केसेस विल सी इनटू कमिंग लेक्चर कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में गया मीन्स प्रोसेस एग्जीक्यूशन में गई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई. ओके, like it is similar to similar to students. Okay, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. ओके, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया लेकिन वो पास आउट नहीं हो पाए. ओके, या तो उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया, या तो वो फेल हो चुके, या तो डिटेन हो चुके. ओके, लाइक ब्ला 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 व्हाटएवर सो द रीजन. ओके, और कई बच्चे पास आउट हो चुके. सो जो लोग पास आउट हो चुके उनका भी एक रजिस्टर है. ठीक है, कि दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड आउट द इंजीनियरिंग, बट अदर रजिस्टर इज आल्सो देयर हु which takes the notation that this number of students has not cleared the engineering
Okay, so has not completed 4 years of engineering. So here we have two types of execution as well for both. Okay, so here we we make this even configuration for all. Okay, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? We'll have to set up and processor register for proper execution. Okay, अब proper execution के लिए क्या हमें चाहिए? एक stack चाहिए, जैसे यहाँ पर है. Okay, this is what we have, a stack. Okay, so what the stack will containing a temporary data like the function parameters, return address, and local variables. Okay, we'll see further वो क्या क्या है. Okay, data section containing the global variables means जैसे into C and C plus plus program, especially in C program, you were and Java also. Presently, you might be learning Java. So जिसके अंदर दो तरह के variables लिए जाते हैं, global variables and the local variables. Okay, okay. So here also we define the global variables for processors and local variable for execution of a process as well. And heap containing memory dynamically allocated during the runtime means नंबर ऑफ प्रोसेस. जैसे ये बैच सिस्टम है या टाइम शेयरिंग सिस्टम है, जैसे जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जाएगा वैसे वैसे उसका जो ड्यूरेशन है एग्जीक्यूशन वो प्लस डायनेमिकली प्लस माइनस होता रहेगा, और जैसे होता रहेगा वैसे ही उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी. ओके, सो कभी कभी ये होता है कि मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई होती है या तो ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं होती. ओके, सो दिस इज हाउ we can dynamically adjust the memory run time. ओके, रन टाइम हम उसको मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं, डी एलोकेट भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, सो वी मे गो विद द we may go with the practical session today into Unix. Okay. Okay. So the program is passive entity stored on a disk, that is executable file. Process is active. Okay. So the program becomes process when the executable file loaded into a memory, and the execution of a program starts via mouse clicking, command line entry of its name, etc. One program can be a several process, can generate number of processes. Okay, consider multiple users executing the same program. Okay, so let us move further. कि भी प्रोग्राम है, जैसे you might have made a program for comparison of two variables. Okay, आपने एक प्रोग्राम बनाया लेकिन आपने अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है. ठीक है, तो यू स्टोर्ड पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑन योर डिस्क. कहीं पर आपने जैसे डेस्कटॉप के ऊपर या सी ड्राइव, डी ड्राइव, एक्स ड्राइव पर आपने सेव कर दिया. ओके, दिस फाइन, बट अभी वो एक्टिव नहीं है. ओके, वंस यू एग्जीक्यूट दैट फाइल, आपने वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट कर ली, तो क्या होगा? सो द एग्जीक्यूटेबल फाइल, ओके, सो इट बिकम्स एक्टिव. ओके, वो उसने उसको क्या हुआ? एक्टिव हो चुका है अभी. नाउ एक्टिव होने के बाद क्या हुआ? वो इट स्टार्ट्स जनरेटिंग अ प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, आपने कौन सी प्रोग्राम बनाया है? आपने बनाया है कि कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल्स. अभी जो टू वेरिएबल्स आपने बनाया, ओके, मींस it will ask user to insert the first variable. So that means it is asking a user to give input the variables, that is the program is active. Okay, and you have, and the program executable file or your program is active and started a process. Okay, one single process is active, that is initiated. Okay, and the executable file will work accordingly. अभी क्या आया? insert the value of x. ओके, दो वेरिएबल हमें लेना है कंपैरिजन के लिए. सो क्या इंस्ट्रक्ट किया? enter the value of x.
सो आपने डाल दिया 20. ओके, देन इट विल आस्क अगेन enter the value of y. You insert you assigned a value 10. Okay. Okay, so next will be the comparison. Okay, comparison हुआ कि नहीं, ठीक है. So what happens, enter the value of x, you entered 20, that, and enter the value of y equal to 10. Both will be saved somewhere, where, into a memory. It will load into a memory. क्या हुआ, memory के अंदर load होगा. जैसे ही memory में load होगा वैसे ही वो execution के लिए तैयार हो जाएगा. जैसे ही तैयार होगा, and after the execution of a program starts, okay, that it will compare करने के बाद क्या होगा कि x and y की वैल्यू कंपैरिजन में नीचे एक और ऐड हो जाएगी कंपटीशन में कि भाई एग्जीक्यूट हो जा. तो अभी एंटर द वैल्यू ऑफ x किसने डाला, यूजर ने डाला. ओके, फिर कंपैरिजन किसने किया, वो कंप्यूटर ने किया. लेकिन जो कंप्यूटर मीन्स जो भी आपने फाइल जो बनाया है प्रोग्राम फाइल, उस उसके थ्रू एग्जीक्यूशन हुआ. That means someone is there who initiate a program. ठीक है. So program ने initiate किसने किया, executable फाइल वो ऑटोमेटिक है. ठीक है, जैसे कमांड लाइन एग्जीक्यूट. So execution हुआ, and with the help of command line or some either way, but it starts executing. Okay, already in last lecture also we have seen that just by clicking number of mouses on your screen, it will start generating a process. For example, if you make a right click and refresh your desktop, so it will refresh your desktop. Okay, refresh का बटन दबाए तो जहां पर आपने refresh का बटन दबाया है वो आपका स्क्रीन पूरी रिफ्रेश हो जाएगी. ओके, बिकॉज इट हैज सम रिफ्रेश रेट्स. आपने शायद थर्ड सेमिस्टर में देखा होगा और अभी भी COA में होगा शायद रिफ्रेश. ओके, सो व्हेन यू रिफ्रेश इट विल रिफ्रेश योर स्क्रीन. रिफ्रेश रेट उसको कहा जाता है. सो वो क्या है, वो रिफ्रेश रेट है. इट विल रिफ्रेश योर, सो रिफ्रेश योर स्क्रीन. सो इन द सेम फैशन एज द रिफ्रेश हुआ, तो when you click refresh, the process will be generated and it will be executed because the refreshing has finished. So the refresh होने के बाद वो execution खत्म हो जाएगा. Okay, so that is what one kind of execution ही है. Okay, so और जैसे आपने एग्जीक्यूशन किया, एक से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम आपने एग्जीक्यूशन किया तो क्या हुआ, नंबर्स ऑफ प्रोसेस जनरेट हुआ. ओके, नंबर्स ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या हुआ, उस नंबर ऑफ प्रोसेस जो जनरेट हुई है वो सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन में गई. ओके, ये किसने किया, सिर्फ एक यूजर ने किया. वैसे ही numbers of users starts executing a same program. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया. ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या हुआ, पेपर एक ही है. ओके, सो पेपर वेयर फ्रॉम वेयर यू आर फेचिंग द सर्वर और एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल. वो क्या है, सिंगल है, लेकिन मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेचिंग अ सिंगल प्रोग्राम. सो क्या होगा, सर्वर के अंदर मल्टीपल नंबर्स ऑफ यूजर्स की मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुई. दैट इज several number of processes are being created by several number of users. means n numbers of users जो है उन्होंने क्या किया,
n numbers of process execute queue because it executes same program, but the users are multiple. So multiple numbers of users can generate multiple number of processes as well. Okay. Now जैसे अपने एग्जाम जैसे अपने क्या जैसे अपने फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ओके, इन विच दे आर having like lightning offers, okay, like pre-launching offers. So what happens, और लिमिटेड स्टॉक जैसे स्कीम्स आती है, ऑफर्स आती है कि भाई 10 बजे एमआई का फोन विल बी अवेलेबल फॉर शॉपिंग, ओके। तो क्या होगा कि नंबर्स ऑफ यूजर्स एक साथ लॉगिन करके बैठे रहेंगे, ओके, या तो लॉगिन होंगे और उसी वक्त वो वहां पर क्लिक करेंगे ऑन सेम पेज, जैसे पूरे इंडिया के अंदर या फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ऑफर को, सेम प्रोग्राम को फैच करने वाले नंबर्स ऑफ यूजर्स काफी हैं. सो एज नंबर्स ऑफ यूजर्स आर मेनी एंड ऑल द यूजर्स स्टार्ट क्लिकिंग बाइंग ऑप्शन, ओके, तो क्या होगा, एक नई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी. एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंप्लीशन की ओर बढ़ेगी. सब प्रोसेसर विल स्टार्ट प्रोसेसिंग the query is given by a user. So multiple numbers of users, multiple number of process को generate करेंगे. ठीक है, तो वो जो ऑफर के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को बेनिफिट मल्टीपल देने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है. दो द प्रोसेस इज सेम बट द नंबर ऑफ यूजर्स आर अपार्ट. ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स है इसलिए. Okay, so this is been done very easily with the help of text, then data, heap and the stack. Means कौन सा डेटा है, कौन सा heap नंबर है, ठीक है. then what is the stack to be number of stacks available or for each memory. Okay, this is what the diagram of memory stack or memory stick कि memory, or we can say it is a process register. Okay, અને બીજું નામ અપાય કે process buffer. Other name is caching. Okay, that is what we can access it from the memory. એટલે હું memory માંથી execute કરું તો મારે execute થાય. Okay, so to do so we have હવે જુઓ આ process memory stack છે, અહીંયા બીજું મેમરી સ્ટેક છે અને બીજું થર્ડ મેમરી સ્ટેક હોઈ શકે. ઓકે, before we go further, let me give you an example, live example. Just wait for. Is it viewable? No, sir. No, sir. Okay, fine. Just a minute. Okay, now is it viewable? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So here is what number of processes are there. See, the user is me, single. Okay, but what do we have? We have multiple number of executions are there. Okay, so here numbers of processes are many. एक प्रोसेस कई है, एक प्रोसेस जो है वो है क्रोम की, दूसरी प्रोसेस है वो जूम की है. ओके, देन अगर प्रेजेंटली we have an explorer in which something is going on, that is explorer.exe run है, ppt हमारी चालू है, so it is
इट इज व्हाट माय पीपीटीज आर गोइंग ऑन। सो माइक्रोसॉफ्ट की जो पावर पॉइंट है वो भी चालू है। ओके, अभी जो हमने वॉट एवर वी आर व्यूइंग दैट इज टास्क मैनेजर, दैट इज ऑन अवेलेबल ऑन the the desktop. Okay, so likewise we have many different number of processes available for execution. Okay, apart than this, can you see some other files like winlogon.exe? Okay, then csrss.exe. Okay, so the these all are the processes which are being generated by a kernel. Okay, અહીંયા જુઓ, અહીંયા બધા કોણ કોણ સિંગલ યુઝર છે. Okay, me as a single user who has generated numbers of processes. આ કઈ છે? બધી મારી પ્રોસેસીસ જે છે એક્ઝિક્યુટ કરે છે. ઓકે, બટ આ બધી પ્રોસેસ કઈ છે, કોની છે, કોઈ કહે છે એમાં? ઓકે, CPU હા, સીપીયુ. ઓકે, પછી બીજું કોઈ? કંટ્રોલ યુનિટ પોતે રન કરતી હશે. હા, સીપીયુ અને કંટ્રોલ યુનિટ એક જ છે ને બંને. ધ નેમ ઇઝ સેમ. બીજું કઈ? બીજું કોઈ છે જે આમાં પ્રકાશ પાડે આમાં કે બે આ બે પ્રોસેસ કઈ છે? બોલો બોલો. કોઈને નથી ખબર? 56 માંથી કોઈ નથી એમ? યસ, 15 નંબર. 14 and 15 numbers, 14, 15, 16. There. Okay, fine. So 14 and 15 and 16 number bhi nathi. Okay, so let me explain that this is the process which are being generated by only and only કર્નલ. મેં પહેલા બી કીધું કે આની અંદર એક બહુ જ મોટો હીરો છે. ઓકે, તમને જે ગમતો હોય એ ગમતો, હોલીવુડ નો રાખો કે બોલીવુડ નો રાખો કે ટોલીવુડ નો રાખો કે ગુજરાત નો રાખો, પણ there is single hero available over the operating system and the name is kernel. Okay, so these are the process being generated by our hero name kernel. Okay, जितनी भी लावारिस के नाम वगैरह पड़ी હોય ને બધી કોની હોય? કોની હોય? બધી kernel initiated હોય, because I require to have a permission to execute my process, but the kernel doesn't require. Okay, જેમ કે એક પપ્પા છે અને એક આપણે છીએ. ઓકે, જેમ કે ફાધર હોય એ ઓટોમેટિક કોઈ બી પ્રોસેસ એક્ઝિક્યુટ કરે તો આપણે એને પૂછવા ના જઈએ, બટ ધ સ્ટુડન્ટ, ઓકે, જેમ કે પપ્પા શું કે 1000 રૂપિયાની કઈ વસ્તુ લઈ આવે તે આપણને પૂછવા ના રહે કે બેટા આ વસ્તુ લાવું. ઓકે, એને લાવવી હોય તો લઈ આવે, બટ જો આપણે લાવવી હોય તો આપણે પૂછવું પડે કે હું પપ્પા હું આ વસ્તુ લાવું. સો હિયર ધ યુઝર આસ્ક to kernel for initiation of a process, but the process but the kernel never asks any parameter to a user to execute any process. Kernel requires, then it will definitely generates a process by its own. Okay, otherwise
The kernel has to or the user has to ask kernel. So that is why, see, the kernel memory, that is kernel space, is 90, is presently it is using 98%. Okay, which are non-paged. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, non-paged operating system ના એક pages આવે છે જે execution માં જતા હોય. Okay, so and it uses 71% of physical memory, and processes કેટલી છે? Presently it uses 53 number of processes in single second. Okay, per second 53 processes are under the execution as well. Okay, sorry. Okay, any doubt? No, sir. Okay, No, fine. sir. Let us start from sorry, from where we were. Okay, so to do so, someone is there who instruct a processor to execute in particular manner. Okay, એવું નથી કે ભાઈ આપણા ક્લાસની જેવું નથી. ઓકે, આપણા ક્લાસની અંદર કેવું થાય કે આખો ક્લાસ ભરેલો હોય, મીન્સ 60 સ્ટુડન્ટ્સ અવેલેબલ હોય. ઓકે, તમારા સ્કૂલની અંદર કે ગમે ત્યાં, સ્કૂલની અંદર કે ગમે ત્યાં શું કરો કે ભાઈ 10 સ્ટુડન્ટ આવે, જે આવે ત્યાં બેસી જાય. ઓકે, એવું બને છે કે નહીં ક્લાસમાં? જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રોમ નેક્સ્ટ month or after 15 days even, college may instruct to start offline teaching. That means you have to come over the college and you have to attend all the lectures as well for 6 hours, lab and laboratories. So what you do, you come and sit over the benches. Okay, તમે બેસી જાઓ, પછી શું કરો? And you start learning. This is what, it is your wish to sit somewhere, but the process execution is not as well. Okay, it has to instruct for each and every step to be happen over the processor. એટલે પ્રોસેસર ની અંદર જેટલી બી એક્ઝિક્યુશન કરવાનું હોય એ બધી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન એને આપવી પડે. ઓકે, પ્રોસેસ કોઈ એક્ઝિક્યુટ ના થાય. જેમ કે હું એમ કહું કે ભાઈ ચલો કાલે શું કરીશું? ઓકે, તો તમારામાંથી કોઈ ના પૂછે. ઓકે, જેમ કે હું અત્યારે એવું પૂછું કે ભાઈ પાર્ટિસિપન્ટ માંથી કે ભાઈ મને કોણ કહેશે કે ભાઈ what is process states? ઓકે, એ બી હું ના કહું. એવું કોઈ બી સિમ્પલ what is operating system એવું પૂછું તો તમારામાંથી કોઈ જવાબ ના આપે. But if I instruct someone, okay, for example, to roll number 25, okay, so is it the screen is viewable? એવું પ્રશ્ન પૂછું તો રોલ નંબર 25 શું કહેશે? એનરોલમેન્ટ નંબર 25? Yes કે no? Yes કે no? Okay, so if I instruct someone to do so, okay, then he will give me an answer. Okay, so here also for each and every process, processor has to instruct a process to do so. Okay, and process જે છે એને કેવું પડે કે ભાઈ તારે એક્ઝિક્યુશનમાં જવાનું છે. જેમ કે અમે અહીંયા એવું કહીએ કે તમારે હવે કોલેજમાં આવવાનું છે, તો તમે લોકો શું કરો? સવારે એટ સ્ટેપ્યુલેટેડ ટાઈમ 9 o'clock કે બધા ક્લાસમાં ધીમે ધીમે આવવા માંડે. સો ઇન ધ સેમ ફેશન પ્રોસેસ ને પણ ઇન્સ્ટ્રક્ટ આપવું પડે કે હવે પ્રોસેસિંગમાં જવાનું છે. Getting? So this is how the operating system executes in particular way. Okay, now this is what we instruct process to start the process. હવે આપણે અહીંયા શું કરીએ કે પ્રોસેસ ને કહીએ છીએ કે તમે હવે સ્ટાર્ટ થાઓ. Okay, so we divide the execution of a process in 5 different states. Okay, so हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस जो है उसको हमने
5 अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया है कि भाई पहले आपको ये करना है, पहले आपको ये करना है, पहले उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, और लास्ट में ये कंप्लीट होगा तो फिर आपको एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया जाएगा इन द सेम फैशन। जैसे आप क्लास मतलब जैसे अभी 15-20 दिन के बाद आपको कॉलेज आना है, तो आप क्या करेंगे, एज यू एंटर ओवर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हीकल पार्क करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर जो पार्किंग वाला बंदा है वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई यहाँ पर पार्क कर लीजिए। आपने पार्क कर लिया, उसके बाद जैसे आप गेट के अंदर आएंगे तो आपका टेम्परेचर और सैनिटाइजर आपको दिया जाएगा। ओके, वो नेक्स्ट स्टेप, आप सीढ़ियाँ चढ़कर आपके क्लास में जाएंगे, लाइक 106, 107, 108, वॉट एवर योर क्लास नंबर इज, उसमें जाएंगे। फिर आपको वहां पर दिया जाएगा कि ओके क्लास नंबर, माई सीट नंबर इज दिस वन, तो आप 5 नंबर की सीट पर आप बैठेंगे। ठीक है, नाउ whoever the instructor is, कोई भी फैकल्टी है वो आपको क्या करेगा, नाउ यू गेट रेडी टू स्टडी, आपने स्टडी कर दिया, दैट मीन्स प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो गया। ओके, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, पूरा दिन आपने पढ़ लिया, उसके बाद ओके अटेंडेंस हो गया, उसके बाद टर्मिनेट मीन्स लास्ट 2 बजे का बेल बजा, मीन्स प्रोसेस इज फिनिश्ड। ओके, नाउ आज की पढ़ाई हो चुकी। नाउ तो आप क्या करेंगे, वापस गेट के बाहर चले जाएंगे और एक्टिवा या व्हीकल लेकर आप बाहर चले जाएंगे। दैट मीन्स द प्रोसेस इज फिनिश्ड, आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका। ओके,